कूदने की कोशिश. Right. So that's what we're talking about. Exceptionally good leaders really focus on this. In fact, they get selected as leaders of top companies because of this. बैलेंस. देखो अच्छी कंपनीज में अगर आप ट्विटर ऑफ द वर्ल्ड्स देख लो, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, यहाँ कोई टैलेंट की तो कमी नहीं है. एवरीबडी इज़ अ ब्लडी हार्वर्ड MBA, एवरीबडी इज़ दिस, एवरीबडी इज़ दैट, सबने स्टैनफोर्ड कर रखी है, या IIT से गए हुए हैं, या कुछ है IIM से गए हुए हैं. राइट. इवन दिस गाय, डॉचे बैंक गाय, अगेन IIT IIM चैप, या SRCC IIM, व्हाटएवर. सो ब्रिलियंस की तो कोई कमी नहीं है. राइट. बट टू गेट टू दैट position, right, this becomes a very important criteria. Right. बैलेंस माइंड बोल सकते हैं. हाँ जी. लाइक बैलेंस माइंड इस तरह का कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं. Ability to be present. कि आप उस मोमेंट में, जिसको हम बोलते हैं, बोर्ड है अपने पास, हाँ, be here now. वहीं पर ही बोर्ड कहाँ है? मार्को. Very powerful phrase. Be here now. इस स्टेटमेंट के थ्री वर्ड्स हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों का अलग अलग मीनिंग है. जब ये तीनों जुड़ते हैं तो माइंडफुलनेस क्रिएट होती है. Now is a factor of time. Here is a factor of space. And B is a factor of your being, your identity, who you are. So it's like saying, if I were to ask you a question right now, are you here now? Yes. Physically you may be, but I'm talking to your mind. Are you here now? क्या आप अभी यहाँ पर हैं? अभी मतलब there's a time value to it. Right. So it's not a balance issue, it's a calibration issue. आपका सवाल बहुत रेलिवेंट है. राइट. इट्स अ कैलिब्रेशन प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ बैलेंस प्रॉब्लम. कि अपने आप को थोड़ा सा धक्का देके एकदम वापस आना पड़ता है. हाँ, मेडिटेशन करते हुए भी और वैसे भी बैठे हुए भी मतलब कहीं और ही पहुंच जाते हैं. कहीं और पहुंच जाता है. ये एक ख्याल आया और पहुंच गया. वो तो नहीं कहता ना, तो फोकस जैसे काम भी कर रहे हैं. हाँ, कोई जहाँ पर फोन उठाया तो व्हाट्सएप की दुनिया में चले गया, तो लाइक बैक टू फोकस. हाँ, बैक टू फोकस बार बार आना पड़ता है ना. सो एंड इट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, राइट, बिकॉज इट इज depriving you of so many beautiful things in this world which already exist, which you are looking for, because you are not here now. आप deprived हो because of that. So practicing mindfulness is about identity, space and time all being together. Right. And when we're saying, it's really more of the mind space, not exactly physical space. Right. But being totally aware of what's going around me. You know why it's so important? सबसे बड़ी बात, ताकि आपको दुनिया बेवकूफ ना बनाए. Remember that in business, everybody around you has an agenda. So if you're fully present in that moment, at that time and space, with your complete identity means जो भी आप जानते हो, जो भी आपने सीख रखा है, जितना जानते हो, वो सब कुछ अवेलेबल है, सारे हथियार. That's your complete identity. That means you haven't forgotten about your abilities. Right. एक कैपुचिनो.
जी आपकी आप प्लीज। नहीं नहीं मैं कोल्ड कॉफी आपका Are you sure this is for me? Thank you so much. Sugar है? दिस इज मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन दिल की बात. He's very much here. At least to my needs. Thank you very much. Ability to be fully present, aware of where we are and what we are doing. What we are doing. जैसे 90% of the time when you're on the phone, you don't even know you're on the phone. How true. Because the moment you become aware, you अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, हाँ. इतने सारे काम छूट रखे हैं. लिटरली बिल्कुल आपने ना सही पॉइंट पकड़ा. सभी का है. मोस्ट ऑफ ये अस पूरा आर global fit हो जाता है. क्या कर रहा है, अरे यार ये कर क्या रहा है, फिर वही इंस्टा, फिर ये वही. आई मीन हाँ. you really don't Addiction realize है, कि what you are doing actually. How much time just passes? Yes, Right. sure. So it becomes a challenge. And when there is actually a moment to enjoy something, including जैसे मैं किसी एक बड़े अच्छे योगा टीचर से मिला था, तो he said 90% of the problems are because we don't eat well. What do you mean by eat well? Is it to do with the choice of foods? I said, no, I was not talking about that. So eat well means कि जब खाना आपके सामने है, खाना नहीं खा रहा. तो आप खाना तो खा ही नहीं रहे हो. आप या तो फ़ोन पे हो, या लैपटॉप पे हो, या आप कहीं किसी और दुनिया में हो. एंड एज अ रिजल्ट यू एंड अप ईटिंग टू फास्ट. ईट वेल से मतलब और यू ईट टू मच. राइट. तो उस वजह से फिर मोटापा और बाकी सब चीज़ें आनी शुरू होती हैं. राइट. यहाँ डाइजेशन प्रॉब्लम्स आती हैं इफ़ यू ईट टू फास्ट. So he said, then how do you eat well? He said, देखो most of us don't need more than a roti and a little सब्जी. उससे तो पेट ही नहीं भरेगा. नहीं, पेट तो भरना ही नहीं होता, पेट तो भरा होता है, मन भरना होता है. तो मन कैसे भरेगा फिर? जब पूड़ियाँ हो खूब सारी तो दिल करता है खाते रहो खाते रहो. कहते वो एक रोटी एक पूड़ी एक एक उसकी गराई लेके आप उसे डालो, उसे धीरे धीरे घुमाओ जैसे गाय घुमाती है. राइट. इंजॉय कर करके उस एक एक बाइट को खाओ. एक एक बाइट एक रोटी के बराबर. दैट इज व्हाट ही मेंट बाय ईटिंग वेल. नॉट ईटिंग वेल कि दबा दबा के खाओ, या अच्छी चीज़ें खाओ, या पूड़ी आलू मत खाओ कि उससे तबीयत खराब होती है. ही सेड यू हैव टू ईट एवरीथिंग, बट हाउ डू यू ईट वेल? इट इज अगेन, आर यू माइंडफुल व्हेन यू आर ईटिंग? It is the primary source of a lot of problems that we face. Whether it's food, whether it's family, whether it's work. Eventually, food is also something you're absorbing. आपके सामने एक task है बड़ा important. आपको काम करना है वो. Right. अब वो एक ही पैराग्राफ है, देखिए फटाफट करके निकाल दिया. लेकिन अगर आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ो तो कई बार आपको पूरा जिस्ट समझ आ जाएगा कि बाकी कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा. बट अगर आप ऊपर ऊपर से ही देखोगे कि यार ये कोई और देख लेगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, सो यू मिस द बिग पिक्चर. सो नोइंग व्हाट यू नीड टू बी लुकिंग एट एंड बीइंग सो फुल्ली प्रेजेंट टू इट व्हाइल यू आर डूइंग इट